नहीं, मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए। ये औरतों की वर्ड है वैसे. यानी शादी की रात they went home and वहां से they went to the hospital. What kind of sick shit is this, man? जब निकाह नामा साइन किया है तो उसका और क्या मतलब होता है? Alright. Alright. How are you? I'm good. How are you? कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. अच्छी की रिपोर्ट है. सब अच्छी की रिपोर्ट. Alright. Okay. So, Alright. अच्छा, serious topic था. बड़ा कुछ interesting पढ़ा हमने, है ना? हाँ. You wanna Some see? crazy amazing facts. हाँ, दिखाओ. So there was a post by Womanistan. वो भी स्थान का नहीं है ये. Step post हाँ, I है. mean they posted it. अच्छा. And then it says कि 46% of married women cannot say no to intercourse with their husband even if they do not want to have it. this is one of the statistics, but yeah. चलो let's see केस के बारे में हम क्या कहते हैं. But first of all यार, ये कितना accurate है ये मैं मतलब thinking of के ये सर्वेज देखो अगर हो रहे हैं तो वेरी नाइस कि कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे औरतें सच्ची सच्ची बातें किसी को बेशक एनोनिमसली से ही बता सकते हैं कि यार हम वी कैंट से नो टू आवर हस्बैंड्स एंड इतना उनको अफेक्ट कर रहा है कि दे एक्चुअली स्पीकिंग आउट अबाउट इट कहीं पर जाकर. ये कहाँ पर हो रहा है? आई डोंट नो. मे बी दिस इज ऑनलाइन सर्वे दे डिड और आई डोंट नो हाउ दे डिड बिकॉज it's really hard for women to talk about this. It says it. अच्छा, that says the source. See, it says the source is Pakistan Demographic and Health Survey, 2017 to 2018. So there is a source. So it's a proper survey that happened. ये 2017 और 18 के figures हैं. हाँ. So now you think it's worse or less? Well, I mean, I think it should be the same. Did you ever complain about this? Well, not really, but I can imagine because it's not something that girls talk about but easily. So, like. That's what I'm saying. ये facts हमारे पास हैं, ये survey हमारे पास है. That's a big thing because talking about it is kind of taboo, right? It's kind of hard. And even if something like this is happening to you, I don't think you're gonna open up about it unless आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्त है या बहुत ही किसी safe environment में हो. Because people then also judge. They're like, oh, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, हो तो तुमने, why are you feeling like this? Because in a way, in their heads, it's, yeah, Islam में थोड़ा है ना, Islam में नहीं, but I mean, yeah, like you can't say no to your husband. So I've मतलब बचपन से मैंने सुन लिया था as a man कि if you want it and the woman says no, तो apparently फरिश्ते पूरी रात आपको और उस औरत को लानते भेजते हैं. But the word लानत भेजते has been used for this if you're saying no to your husband. And when you hear that, तो I don't know, man के लिए तो easy है. Oh, we're the man, you know, we can do anything we want. Exactly. But औरत के लिए and ऊपर से बहुत ज़्यादा जो famous scholars हैं, even women scholars जो पाकिस्तानी हैं कुछ, they say that things like marital rape do not exist. But there is no such thing as marital rape. मूड नहीं है, दिल नहीं मान रहा, तो क्या हुआ? ना सही. क्योंकि आप ये अपनी तो भी फीलिंग्स है नहीं, और आप तो सिर्फ आपकी शादी इसलिए है कि आप अपने हस्बैंड को रखकर उसके लिए रेडी हो. Yeah, but I know you're talking. I think I know you're referring to. But यार वो बहुत extreme. ऐसा बड़ा but. But the thing is कि it's a very people put her in very high regard. मतलब लोग उसको बहुत आलमा समझते हैं. मतलब how should I say that? She's one of the most famous Pakistani female. Yeah, schools हैं उनके इतने ज़्यादा मतलब all over Pakistan. She's teaching this to other people. Yeah. और in a way you're justifying rape. चाहे वो आपका शादीशुदा उसमें हुआ है या मतलब उसके बगैर हुआ, rape is rape. But like लेकिन husband का mood हो रहा है तो mood बनाओ ना. Exactly, ये तो बात मतलब करोड़ reasons हो सकती हैं यार. मतलब क्या है भी नहीं दिल करा? Isn't that reason enough? अच्छा, what if the woman is on her periods and the woman says I want it और उसको ही पता था and the woman says no, then फिर क्या है? फिर भी लानते भेजेंगे रिश्ते पे. क्या मतलब?
मतलब you can't have sex for your periods, right? So वैसे भी the woman can say no, हाँ right? So एग्जैक्टली कि हस्बैंड जी मियाँ जी कि अब नहीं मुझे हम ये नहीं नहीं करते पता कि यार कि मतलब what do they think is like even then is it just like yeah but that gets a bit disgusting, but yeah 46%, man, that's like that's half. half yeah imagine मतलब आपके पास इतना बेसिक राइट नहीं है कि आप ये कह सको कि नहीं यार I want some say over my own body भाई अभी नहीं हो सकता तो नहीं है भाई and that's where the slogan comes from मेरा जैसे मेरी मर्जी टाइप जिसका लोगों ने हर टाइप का मतलब निकाल के उसके अलावा सिर्फ जिसका असल में मतलब है उसके अलावा उसके करोड़ मतलब निकाल के उसको इतना गंदी तरह पोर्ट्रे करते हैं जैसे इससे गंदा स्लोगन जो है ना उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सुना हालांकि इट्स सो सिंपल इसमें क्या मुश्किल बात है समझने वाली Yeah, man. और ये बात बचपन से सब मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि एक तो ये वाली बात के मना नहीं कर सकती औरत, तो दूसरा कि अगर सजदा अलाउड होता तो मर्द को करते, तो मैन कम्स इनटू अ वेरी तो मर्द मतलब तो शादी में एंटर ही अपने बड़े सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है ना कि मर्द तो मतलब I now that I think of it, it's not the healthiest thing to grow up with, right? कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, and then they have men who are taking this so seriously कि वो कहते हैं कि यार if I wanted the woman can't say no. और I get how in a relationship या शादी में तो बिल्कुल ही नहीं सोचते होंगे यार कि ये रेप है, ये तो मेरा हक है exactly ना है. so sometimes people say ना when you sign the contract that's what you're signing up for तो क्यों फिर बाद में मतलब जब निकाह नामा साइन किया है तो उसका और क्या मतलब होता है Yeah, but maybe a man doesn't feel nice ना कि यार मेरा मूड हो रहा है बीवी ना करे, maybe he feels like oh why not, मैं मुझ में कोई कमी है या वो क्या मतलब कि बस या मुझे क्योंकि चाहिए और मुझे मिला नहीं है तो मुझ में कोई कमी है तो हाँ, दैट्स वेरी साइकोलॉजिकल थिंग फिर तो मतलब उसको तो बहुत मेंटली फक्ड है बंदा और इसका कि मूड क्यों उसको नहीं है हर भाई. चीज में ये अपना कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है हर चीज में यार देखो शादी के बाद one of the how to say it, बेनिफिट्स ऑफ one गेटिंग of the मैरिड हाँ benefits is that you can have you can freely express your sexuality, सही है ना. सही I think it goes for both women and men, right? Because Islam में हम वैसे भी this I do agree यार कि sex नहीं allowed यार पहले and सब कुछ, so sex is a part that comes after शादी, सही है. So a lot of women or men have waited for the शादी to be able to do that, सही है. a lot And of then शादी women हो maybe क्या a lot of women yes and men probably, but uh, then the man wants yeah one of them wants it and the other, but let's say it like this, one of them wants it and the other हाँ one is like nahi I हाँ don't want to. So maybe it's तो maybe एक it's सेकेंड अच्छा as two people in a relationship I feel like doing one thing but you don't feel like doing that thing does that make you like yeah someone के oh उसको तो मुझसे प्यार नहीं है he doesn't want to go out with me या he doesn't want to I don't know enjoy something with me like ये क्या बात है well, that's different. Yeah, this is no sex. that's not that exactly like it's a thing जो both of you have to enjoy in the moment for it to be nice if one of you is tired या उसका मूड नहीं है या उसके दिमाग पे कोई और स्ट्रेस बहुत ज्यादा मर्दों का भी ये प्रॉब्लम होता है बाय द वे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड ऑल दैट दे can't do it and I've also heard the flip side of it कि the women complain कि oh like it's been ages blah blah because my husband is really stressed out वो जो हाँ भी तो ये देखो ना यार सही है ना लेकिन इसका ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसको फिर नहीं मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए क्या पता वो हफ्ते से स्ट्रेस था नहीं मूड बन रहा था, अब उसको मूड बन रहा है तो वो ना क्यों तो कहती वो है. फॉर अब उसका क्योंकि एकदम से मूड बन गया तो उसका तो मतलब ऑन डिमांड है ना नहीं यार है ऑन डिमांड नहीं है, I don't know, पता नहीं मतलब why अच्छा यार you can be tired, you can be नहीं यार stressed, you can be मैं आज नहीं मूड यार आज मेरा सिर्फ चिलिंग का मूड है मेरा नहीं मेरा दिमाग नहीं हर वक्त ऑन हुआ है किसी और तरफ यार you should also be able to enjoy just being in your partner's company right that's also a हाँ part of ये the relationship मतलब I mean एक दिन अगर नहीं हो रहा वो तो आप किसी और तरह भी एंजॉय कर सकते हो जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ यू couldn't have sex that night तो मतलब आपका रिलेशनशिप फक हो गया या आप दूसरे से अट्रैक्टेड नहीं हो या मतलब कोई इतना कोई बिग डील है ये
You can just spend time with each other. That's okay. फ्लिप साइड में देखो, औरत आती है हमारे पास कि यार हाँ जी चलो, and then the man is like, नहीं, I'm tired, I don't want to do it, it's okay, right? हाँ, how can a woman force the man to नहीं भाई, मैंने कह दिया ना तो मुझे तो चाहिए. Get ready, showers. Yeah, but if a woman is home the whole day, she hasn't worked, she isn't tired. You think a woman who's home the whole day does not work? अच्छा, ये बताया. Sometimes they work more than the men. Exactly. Sometimes they're more stressed out than the people who go out to work. हमारे कल्चर तो वैसे भी है. Exactly. ओ बहू आ रही है मतलब काम वाली आ रही है. मतलब वो लकी है कि वो अकेले रहती है, उससे सिर्फ अपने हस्बैंड का काम करना है, तो वरना तो वो तो अब औरत खाना ना बनाए, सफाइयाँ ना करे, चीजें ना करे, तो फिर तो उसकी वैसी वैल्यू कम हो जाती है औरत. और फिर घर का सेक्स भी ना दे. तो फिर आई भी क्यों है वो घर में? शादी क्यों की है मैंने? हाँ तो फिर मासी रख लो, तो सेक्स वैसे भी नहीं मिल रहा तो. एग्जैक्टली. सी सेक्स मिल ही रहा, सिर्फ काम हो रहे हैं, तो उसका भी क्या फायदा, मासी में ना रख ले. वैसे ये कहाँ लिखा है, मतलब मिल ही नहीं रहा. It's like they can't say no to them. It doesn't mean कि they, it's not like oh they ask them once a week and they're like oh नहीं मेरे नहीं करना. That's not what it means. Yeah. हाँ, और ना नहीं मैच होती कुछ लोगों की यार सेक्शुअल वो यार. किसी का दिन में एक दफा काफी है, किसी के लिए हफ्ते में एक दफा काफी है, किसी के लिए वो है. सो if the औरत doesn't want to, तो फिर it has to be, it can't be. देखो, in no sense it can be forced. ये तो बात नहीं है. And if it's something जो आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको बहुत मसला कर रही है, तो फिर आप मतलब डिवोर्स ले लो, फिर आप कोई ढूंढ लो जो मतलब I don't know. But it is also vague. They can't say no. क्या मतलब 46% women can't say no. क्या husband आया है क्या I want say they can't say no. क्यों नहीं? मतलब in the fear of, because the husband is like ये तो मेरा मतलब हक है, you can't say no to me. Like yeah, in maybe scared of जबरदस्ती कुछ ना हो जाए मेरे साथ. Scared of नाराजगी. Some men stop talking to their wives, stop giving them money, वो जो उनका होता है monthly something because you're not fulfilling my farais. So yeah, that's a tricky one, man. But it has to do a lot with religious war, the connotation with it, and then the fact that your spouse is your खेती type and do whatever you want. फिर वो वाली बात. But whenever you want. हाँ, अब ये नहीं. Like fine, whatever you want. That's सही है. उसका भी मतलब you should I think actually read के सीखो किस context में क्या बात है. अब come on, as a man, this is the reality of our culture, man. मैं अपना देखता हूँ. I was मर्द को सजदा वाली बात सुनो, तुम वो सेक्स से मना करे तो फरिश्ते आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं इस बात में. मतलब ये फरिश्ते तो पास बेहतर काम करने के लिए नहीं है कोई. हाँ, मतलब ये तो उनकी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, तो मतलब दिस इज अ बिग थिंग. सो अ मैन आई डोंट नो, मतलब मैन को खुश रखना इज बहुत जरूरी. मतलब उसके अलावा नहीं हो सकता कुछ भी. ये मर्द की खुशी अल्टीमेट हुआ, क्योंकि औरत की खुशी तो औरतें तो वैसे ही नाशुक्री होती है and all of this thing, तो वैसे लोग बहुत कॉमनली कहते हैं दोज़ख में सबसे ज्यादा औरतें इसलिए होंगी क्योंकि वो नाशुक्री अपने हस्बैंड की वजह से. stupid. I don't know यार, you don't have friends. but मेरा दोस्त मेरे पास अभी आए के, कभी मैंने सुना नहीं ऐसे, लेकिन मेरा दोस्त के यार के यार मैं I go home, I want to have sex and a woman says no to me. And he's frustrated about that. तो वो भी बुरी बात है. Say it. Obviously, then you should get couples counseling. मतलब you work on the relationship. So, see, saying no to sex can also mean कि यार maybe ना इसलिए क्योंकि कोई मसला है. Could be, but that's not always the case. मतलब ये statistics ये नहीं है कि मतलब ये ना one off saying कि oh बिल्कुल ही इनकी sex life खत्म हो गई है and the husband keeps saying oh I want to have sex with the woman. Like, and as a man, how would I want sex जिसमें औरत की मर्जी ना हो?
Exactly what जिसमें kind वो of बड़ी man है? जबरदस्ती वो कर रही हो गया है, मतलब I don't Yeah, think as what a kind man of that's nice. So 50% of men are having sex sometimes which जिसमें उनकी औरत का कोई वो नहीं है. but the thing is maybe the women can't say no, so they don't say no. Also, क्या तुम रिलेशनली हेल्दी रहो यार कि नो कहें, बात हाँ करें इस बारे में, क्या मसला है, क्यों. यार इतना आपस में Yeah. खुल के बात कर सके तो क्या ही बात है. I think half of the couples in Pakistan don't talk at all, like about issues and proper Sex life. anything. Their sex life even. I don't know. It's weird. तो यार ऑनेस्टी होगी, चीजें होंगी तो आपकी मतलब सेक्स लाइफ इंप्रूव होती है, राइट. मतलब इट्स नॉट जस्ट एनिमलिस्टिक वो ना यार, एक्ट के बस. लेकिन बहुत ज्यादा लोग इसको इस तरह भी तो देखते हैं ना कि like it's not something to be enjoyed basically. कुछ है इस तरह की भी बात, like even in अगर आप डिटेल में थोड़ा उसमें जाओ I've never heard this. क्या मतलब you're not supposed to enjoy it? religiously something, it's just like an act. What I've heard is कि बिल्कुल मतलब it should be अंधेरा and it should be see and it should be very fast and yeah, हाँ but then I don't know man. so I think it's also that oh ये कोई मतलब enjoyment वाली बात तो है नहीं, maybe like Oh man, I think कुरान में इसलिए भी कहता है ना यार कि आपकी खेती है ये वो, Allah knows कि what yeah kind of man he made and what kind of people he made. He knows कि people want to enjoy sex, ये वो उसी ने हमारे लिए बनाया है, right? So I don't think, मैंने to be honest कभी इतनी कोई नेगेटिविटी इस बारे में नहीं सुनी. और ये भी जो मैं कह रहा हूँ ना धैर्य में, ये मैंने बहुत कोई एक्सटर्नल कोई एक्सट्रीम किसी सोर्सेस से मैंने सुना होगा, वरना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कुरान में इस बारे में नहीं पढ़ा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप स्टोरियाँ सुनो तो हदीसों में क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि 11 बीवियां थी and he used to go all night let's and not go there. yeah, but मतलब the way they speak about sex, it's yeah, Yeah. it's not something हदीसों कुरान में जो मुझे लगता है जो बहुत ही कोई छुपा छुपा ढकी वो बात है. बट हाँ, औरत औरत की औरत ज्यादा एंजॉय ना करे, वो क्यों कर रही है ज्यादा एंजॉय, हाँ because that might seem थोड़ा सा you know what I mean. हाँ I know ये और ये है मसला. ये खराब औरत है, ये हाँ एंजॉय कर रही है. अभी exactly जब इसका शो तो लिखा मसला है कि मेरी तलाक हो रही है, क्यों हो रही है, वो शर्माई नहीं रात को. हाँ I'm sure यार ऐसा बहुत ज्यादा या मसला बट ये इमेज है ना यार कि औरत क्यों एंजॉय कर रही है, एक्सेंट क्या मतलब शी नोज हाउ टू डू इट. ओह ये तो वो उसमें ना थोड़ा वो होता है. हाँ So I think a lot of women have to always fake it. suppress इसलिए their oh, sexuality के हाँ नहीं yeah. नहीं मुझे तो बिल्कुल that's just twisted man हमारा कल्चर जो है ना. So yeah, in a way these kind of things also like जो आपकी open communication नहीं है, आपके religious किस्म की कुछ चीजें हैं जिन्होंने आपको बिल्कुल ही kind of handicap किया हुआ है कुछ भी करने से, because people throw the religious card in your face कि भाई क्या कह रही हो तुम, ये तो हमारे रिलीजन में है ऐसे, मतलब how dare you. उसकी वजह से फिर बिल्कुल ही आप No, but maybe there are women जो ये believe करती हैं कि पूरी रात लानते पड़ी हैं उनको, I'm so sure there are they should not say yeah no. probably that's why the statistics are so high. लेकिन yeah Next post क्या था उसका? Because I see there's a lot of other stuff there. इसके next वाला थोड़ा सा Yeah. 41% of इधर इधर नहीं यार, I want to read it. क्या होता रहे तो. अच्छा 41% of married Pakistani women cannot ask their husband to use a condom even if he has sexually transmitted infections. Like what kind of sick shit is this, man? मतलब and where is he getting those infections from? and shouldn't he get it treated before? मतलब I don't know what the fuck is this, man. And then again 43% of married Pakistani women cannot say no to intercourse with their husband even if he has sexual relations with other women. That's absurd. So मतलब That's the man absurd. is getting his way हर तरफ से. So yeah. Dude, but that's sick, man. मतलब बेचारियां ये भी सिर्फ कह रही है कि कॉन्डम यूज कर लो यार. मतलब Yeah. Keep me safe at least. मुझे तो अपने गन से दूर रखो यार. you're so disgusting कि I at least यार कॉन्डम Yeah. पहन लो यार, and the man cannot be like नहीं. But यार this is पता है ये औरत की ना वो सूरत हाल का वो है यार. It's so sad कि उनके कोई सही नहीं है और इसमें. आप इस तरह के मसले लेके जाओ ना किसी के पास,
स्पेशली सही है यार, आप किसी बहुत ओपन माइंडेड अच्छे घराने से मतलब ताल्लुक रखते हो तो मे बी नॉट, बट थोड़ा सा भी अगर आप आई डोंट नो कहीं छोटे शहरों में या इस तरह की किसी जगह पे चले जाओ, तो वहां पे तो दीज इश्यूज आर नॉट रियल इश्यूज। मतलब इन इश्यूज पे अगर आप आके किसी को अपने मसले बताने की कोशिश करोगे तो हर कोई आपको कहेगा क्या तुम पागल होगी हो, मतलब वापस जाओ। यार मसला ये है कि सेक्स के बातें आप किधर करोगे? Yeah. we don't have a society, we don't have a culture जिसमें सेक्स, I'm sure Even ये sexual ये education बातें देना। सुनते हैं लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता होगा, जैसा मुझे कभी लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है when they're talking about sex, Yeah. because it is a very tough topic to talk about. मुझे अब तुम्हारे साथ कोई मसला है, तुम्हें कोई मेरे साथ मसला है, who can you talk to? I'm sure यार तुम अपने घर वालों से भी बात करोगे, it's such a odd topic Yeah. कि यार it'll be very hard. Probably not. दोस्तों से बात करोगे, किसी उससे बात करोगे, साइकेट्रिस्ट से बात करोगे, और मौलवियों से या किसी इस्लामिक स्कॉलर से, आई डोंट नो हाउ उनसे दैट, तो कोई उम्मीद नहीं रख सकता बंदा कि वो कोई मतलब सेंसिबल वो बात तो करे। कहेगा यार तुम्हें लानते पड़ेंगी, तुम तो वैसे ही हाँ। जाओ, मतलब उस मूड नहीं है, दिल नहीं मान रहा, तो क्या हुआ ना सही। और इस बात पे तुम अगर कहती हो कि मैंने तलाक चाहिए ये चाहिए, तो मतलब ये तो कोई बेसिस ही नहीं है। Yeah, but come on, man, you ये can't भी even say no to नाशुक्री। sex when the husband clearly has diseases. Well, that's Or when you clearly know that your husband is cheating on you and still. so the woman can't even say no. बेशक diseases पे आ जाए. I हाँ। don't know. And then these women, कौन सी women है बेचारियाँ यार जो can't even, I get which women they are, but oh my God, it's so hard for women to leave a relationship. Or, No, it's not just that. Even women who are educated, who are from well-to-do families, and families might be very open about everything and very supportive. Even they sometimes fall for it. मतलब उनके लिए भी कभी कभी ये चीजें वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कि ओ अच्छा इतनी सी बात पे अच्छा नहीं यार इट्स ओके, तो होता है इस तरह, लाइक इट्स डिफिकल्ट। हमारी सोसाइटी यार बहुत इसका वो है। सोल्यूशन एक ही है यार, सीरियसली मैं जैसे बैठा सोच रहा हूँ कि ये इट्स वेरी हार्ड टू टॉक टू समवन, देन द ओनली सॉल्यूशन इज कि वुमन हैज फ्रीडम इनफ इन हर लाइफ टू say no to this, because if she can't say no to this, these are things you want to take खुद action on. These are not things you want to go talk to someone or ये वो, like seriously Exactly. मर्द 2 मिनट ना लगाए, if he doesn't want to have sex with a woman or कोई Yeah. disease है तो 2 मिनट में कहेगा यार listen, Side to like, मैं दूसरी बीवी कर रहा हूँ, मतलब तुम तो जाओ साइड पे. So yeah. I think इसका solution is never gonna be कि किसी दोस्त से बात कर ली, वो sympathy दे दी उसको कुछ ये कर दिया वो कर दिया. The only Taking action after the fact is never the solution anyway. मतलब so if the woman doesn't have freedom to say, I don't know, freedom to live her life, man, मतलब इंडिपेंडेंट हो यार, उसको Independent पता हो is- यार मैं किसी पे रिलायबल नहीं हूँ, इवन पानी But- शानी खाने के लिए, लाइक that's the biggest problem in our culture. एग्जैक्टली। कि हमारे पेरेंट्स, I don't know, but मेरे पेरेंट्स में सेम था, बाकी मेरे सब दोस्तों के पेरेंट्स में सेम है मोस्टली. डू आई इवन नो एनी दोस्तों का हाउस होल्ड जिसमें औरत कमा रही है ज्यादा, या एटलीस्ट अपने No, it's not equally even कमा that. रही अगर है. औरत ज्यादा कमा भी रही होगी ना, लेकिन उसको पूरी जिंदगी फिर भी अपने घर में एज ए सेकेंडरी सिटीजन रखा जाता है, क्योंकि उसके भाई पहले आता है। आपकी ये सेक्सिज्म जो है ना, ये घरों से, अपने घरों से शुरू होती है। कि जब आप सुबह उठते हो तो जी किचन में कौन जा रहा है और बाहर सोफे पे कौन बैठा हुआ है, किसको घर बाहर रहने की इजाजत तक इजाजत है, कौन किसका कर्फ्यू लगा हुआ है। और इन्हें ये चीजें आप देख देख के बड़े होते हैं, जब आपकी शादी होती है तो आप कहते हैं हाँ यार मर्दों के लिए बहुत सी चीजें आर फाइन, इट्स ओके बिकॉज वो मर्द है। हमारे लिए बहुत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि हम औरतें, हमारे पे रूल्स अप्लाई होते हैं, हम पे जो है वो मतलब हदूद लगती है कि नहीं तुम लोग की ये लिमिट्स हैं, लेकिन मर्द की कोई लिमिट नहीं है, और ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेबल है। तुम्हारे घर में ऐसे था? हाँ मेरे घर में ऐसा था। तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हारे लिए खाना नहीं इवन प्लेट में डाल के रखा तुम्हारे लिए मतलब एक दफा? come on, like हाँ कभी once in a while कुछ, मतलब ऐसा नहीं, it wasn't like something that was expected of him. It was expected from you. हाँ obviously घर में मेहमान आते हैं, किसने हेल्प करानी है किचन में, obviously the girls of the house, वो चाहे मेरे अब्बू के मेहमान हो, चाहे वो भाई के मेहमान हो, चाहे वो हमारे अपने मेहमान हो, doesn't matter. वैसे रमजान में सहरियां अफ्तारियां किसने बनानी है? सब औरतों ने। मर्दों ने क्या करना है? काउच पे बैठ के टीवी देखना है। You guys are better at it ना, इसलिए. How are we better at it? हमें अल्लाह ने ऊपर देखो से ना, years of better at training. it. Exactly. Because we only got the training. हाँ. Why didn't our brothers also get the training with हम क्या us? करें अब? अब
आप सीखे, इतना मुश्किल तो नहीं है सीखना कुछ भी। But yeah, यही हुआ है, years of this has led to you कंडीशनिंग, या to सही है. क्या सही है? Men were always working and providing कौन से मर्द काम कर रहे थे? historically. जब मैं यार. स्कूल जा रही थी और मेरा भाई भी स्कूल जा रहा था, तो वो कौन सा एक्स्ट्रा काम कर रहा था जो उसको ज्यादा जरूरत थी सब कुछ करने अब के नहीं लिए? यार, maybe, but historically that's No, how. but that's where our training also started, right? क्या training? मतलब बचपन से हाँ. औरतों को जो भी सिखाया गया है वो बचपन तो से सही है, सिखाया तुम्हारी गया माँ तो दुश्मन तो नहीं थी. That's also what she was taught. So that's why she called you है। in the और kitchen. माँ से मैं मत मेरी दुश्मन है। I'm फिर just तुम्हारी saying कि दादी, अभी दादी, that's दादी, sexism दादी. that starts at home, and you have to recognize them and change the patterns. Otherwise ये फिर हमेशा इसी तरह रहेगा. Men and women are totally equal. Huh? मतलब in the chances that they should get, and in मतलब जिंदगी रहने की चीजें, हाँ, दोनों को इक्वली पता होनी चाहिए. खाना बनाना और ये सब कुछ हमारे करना is a पाकिस्तानी very कल्चर basic में तो skill. यार वैसे हमें पता है why that happens. मतलब it's not a safe environment बाहर यार. सही है, हमने इन मर्दों को मैं तो घर के बड़ा अंदर की किया. बात कर रही हूँ. But that's why you weren't allowed to go out ज़्यादा ना, तो कह रहे थे यार. नहीं, but I mean घर के अंदर भी सब कुछ डिफरेंट होता है. इट्स नॉट लाइक घर के अंदर सब कुछ इक्वल है, लेकिन घर से बाहर जाने की आपकी इनक्वालिटी सिर्फ आ जाती है वहाँ पे. मतलब इट्स विद एवरीथिंग. एंड जब आप मर्दों को ये ट्रेनिंग बचपन से दोगे कि औरतें आर इक्वल टू यू, आप दोनों के सेम लिमिट्स हैं, सब कुछ सेम है, तो फिर आप बाहर भी इन्वायरमेंट सेफर बना रहे हो औरतों के लिए, बिकॉज ऑल मैन हैव बीन टॉट दैट. ये कितना और लगता है सोच के, बट आई एम रियली वो कि ऐसा घराना कितना अच्छा होता है, राइट? या मैं कभी देखा नहीं है जिसमें ये नोशन ही ना डाला था औरत में कि यार किचन में जाना है तो मर्द औरत जो अवेलेबल है, जो उधर है वो जाएगा भाई. मतलब कोई मदद करनी है तो इट्स नॉट कि वो पहले औरत को देखा जाएगा फिर मर्द को देखा जाएगा. अगर माँ बाप इसको औरत मर्द को इस तरह ना देखें तो एटलीस्ट घर में, जो तुम कह रही हो किचन काम, सफाई काम, चीजें ये वो, दिस शुड बी अ होल ड्यूटी ऑफ द फैमिली. सही है ना? उसमें मर्द औरत की डेफिनेशंस नहीं होने चाहिए. दिस शुड बी वो. लेकिन आई एम येट टू सी अ पाकिस्तानी घराना जिसमें जिसमें मर्द को उतना ही सिखाया जा रहा है काम शाम चीजें. आई तो थिंक अब इस जनरेशन की जो माएँ हैं, दे वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, क्योंकि उनके साथ खुद हो चुका है. और हमारी जनरेशन की औरतों ने वैसे भी बहुत फाइट किया अपने राइट्स के लिए, इन अ वे कि they excelled in their studies, they tried to work, they did everything जिससे वो खुद इंडिपेंडेंट हो के they could be somewhere today. And जो ज़्यादातर ये वाली माएँ हैं, they're not gonna let their sons be brought up जिस तरह their brothers and they were brought up. या मैन, बिकॉज पेरेंट्स जो सिखाते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाता है. ये तो हमें बताया गया कि मर्द बहुत बड़ी चीज है तो हम ऐसे फील करना शुरू होते हैं. अगर बचपन से हमें ये फर्क ना दिखाया जाता तो हमें भी ना लगता कि यार मेरी बहन कम है, मैं ज्यादा हूँ, Exactly. या मेरे ज्यादा राइट्स औरतों में कम होते हैं. आई थिंक यू राइट. मे बी दिस इवेंचुअली दिस मेंटालिटी लीड्स टू दिस थिंग्स जो हमें पढ़ रहे हैं यार के. Yeah. It has mostly to do with not seeing the other. वही बात है, अदर जेंडर को आप इक्वल नहीं देख रहे, उसको एज ह्यूमन नहीं देख रहे, उसकी फीलिंग्स को आपने बिल्कुल डिसरिगार्ड किया हुआ है बिकॉज you're not going to take no for an answer, या मतलब बस ये तो मेरा हक है. But what do you mean यार? They can't say no even if they know कि they have relation with other women. No, क्योंकि इसमें फिर फिजिकल वायलेंस भी आती है, because a lot of times they're scared, क्योंकि फिजिकल वायलेंस तो बहुत ही कॉमन है. चपेड़े मार दी, मतलब धक्के मुक्के मार दिए, इधर उधर कर दिया, मतलब. यार I think these facts are pointless फिर, because औरत को कोई फ्रीडम ही नहीं है तो ये तो एक collateral damage of all these things साथ. हाँ ना, obviously it stems from a bigger problem. So she can't go out of the house अपनी मर्जी से, she can't live a life अपनी मर्जी से. A lot of cases में they can't go to work, or they can't work at all, or they can only have specific kind of jobs. ऊपर से this whole notion of इज्जत की चीजें, वो तुम बाहर नजर आ गई तो ये हो गया तो वो हो गया, तो that's also a very negative thing on the relation. So I think यार ये शादी इसलिए इतनी हार्ड होती है इनके लिए यार, because औरत को ओप्रेस नहीं करेंगे तो उनके नोशंस कंप्लीटली रहेंगे शादी के. यार ये वो भी तो है ना, मतलब मर्दानगी दिखानी है तो औरत को अपनी बीवी को जरा कंट्रोल में रखा करो. मतलब you know these snide remarks that people give, जोक्स हैं इस तरह के बहुत ज्यादा, कि मतलब ओ ज्यादा ही क्या जोड़ू का गुलाम है तो ये तो वो है. अगर आप थोड़ी सी भी अपनी वाइफ के फेवर में कभी कोई बात कर दो, so there's a very
मतलब जो पाकिस्तानी मर्द है ना उसके साइकोलॉजिकल और उस पे बहुत कर उस पे रन डिप्ले होता है। रन मुरीद बोलते हैं ना हाँ वो, रन मुरीद तो है, मतलब वो बीवी के बारे में अच्छाई बोल रहा है या फिर बस वो टिपिकल बीवी के बारे में जोक्स है, हाँ मुझे तो इजाजत लेनी पड़ेगी जाने से पहले, हालांकि एवरीवन नोज कि घर में क्या सीन है। This is क्या But yeah, listen, it's also hard ना यार कि if you see your mother always being घर के काम, never working, ये माहौल तुम्हारे लिए नॉर्मलाइज किया जाता है। हाउ एज एग्जाम्पल तुम्हें शादी की ये मिलती है, सही ना, अपने माँ बाप ने नहीं, बाकी अपने हर जगह आप देखते हो, पाकिस्तान में स्पेशली जिसमें देखा है कि द वुमेन आर ऑलवेज क्लीनिंग द हाउस, कीपिंग द हाउस, होम मेकर्स हैं, घर का माहौल उन्होंने संभाला हुआ है, बच्चे वो पैदा करती हैं, वो सब कुछ सफाइयाँ, ये वो खाना पीने, मर्द इज द वन हु इज गोइंग आउट एंड डूइंग दिस, एंड देन नाउ दे आर मैरिड देमसेल्व्स एंड नाउ दे हैव टू चेंज दोस नोशंस कि नहीं नहीं औरत काम करेगी और फिर सफाइयाँ में मदद करानी है चीजें। हालांकि हमारा रिलीजन है यही कि यू नो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलवेज हेल्पिंग, आपकी बीवी आपके काम वाली नहीं है। सो दिस इज अ वेरी कल्चरल थिंग दैट हैपेंस। फिर आप उस रिलीजन से नहीं, आप उस कल्चर से डिटैच नहीं होते कि यार, फिर आपको इसलिए वही लगता है, फिर उन मर्दों को लगता है कि यार हाँ मेरी बीवी काम करेगी, ओ मेरी बीवी ने सफाई नहीं की, ओ मेरी बीवी ने खाना नहीं बनाया, ओ फिर सेक्स पे ओ ना करती है सेक्स पे, ये तो मतलब हाँ ये तो इसलिए, तो इसीलिए वही जिसका मैं कही थी, द वुमन स्कॉलर हु सेज कि देयर इज नो थिंग इज मैरिटल रेप, वो इसको इस तरह जस्टिफाई करती है कि आप पूरा दिन जो है आपको दिल है कि आप घर से बाहर जाएं और आप काम करें, इफ यू कांट कीप अप विद इट एंड इफ यू कांट कीप अप विद योर हस्बैंड्स डिमांड्स देन डोंट डू ऑल ऑफ दिस। फिर आप ना घर से बाहर जाओ काम करने के लिए, फिर आप ना घर में अपने आप को इतना एक्सर्ट करो सो दैट यू आर अवेलेबल टू योर हस्बैंड ऑल द टाइम। आपकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होनी चाहिए, आपके अपने कोई ड्रीम्स, कोई एम्बिशंस, कोई समथिंग कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स इन माय लाइफ, नहीं, आपके पास एक हस्बैंड है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। But then Islamically they say Khadija, Hazrat Khadija was a trader and she was the boss of Muhammad and everything. So क्या मतलब when they got married and all that stopped, you think? She stopped trading, she didn't go I out, don't she wasn't. And imagine यार उस जमाने की trading क्या a थी lot of यार। women यार उस जमाने में गजवाओं में जाके they used to, मतलब they were nurses who would patch up people, scholars थे बहुत ज्यादा, जा जाके ये लोग मतलब वो देते थे, sermons देती थी, और मतलब they were doing all sorts of things even Why back then. Khadija वाली story, Hazrat Khadija वाली story hits me more is because it's a very वो ना trading, you know, she Yeah, was तो मर्दों वाला हाँ। जैसा हम उसका सोचते हैं। और ऑब्वियसली वी डोंट नो हाउ इट इज, बट जिस तरह हिस्टोरिक मूवीज में दिखाते हैं वाज लाइक कैमल्स वाले जमाने और बड़े टफ एंड यू नो यू हैव टू बी आउट, वो इंटरनेट के जमाने नहीं है, सो यू आर आउट एंड अबाउट एंड यू आर डीलिंग विद मेन एंड चीजें, तो ये इफ दैट वाज रियली फ्राउंड अपॉन फॉर अ वुमन टू डू देन these examples They would wouldn't have never given her such a high status in Islam कि यार ये देखो इस तरह, मतलब why would we have that status? ये तो you see it's a pattern, we take everything जो फायदा करती है आउट ऑफ इस्लाम, हर चीज जो नहीं करती उसका मधुरी छोड़ देते हैं, मतलब 4 शादियों पे फौरन चिपक जाते हैं सब, नहीं भाई सुन्नत हम तो पूरी करेंगे। सुन्नत नहीं करा, सुन्नत तो 11 की होगी फिर तो। नहीं मतलब कि रसूल ने भी की थी मल्टीपल, तो हम भी मल्टीपल करेंगे, वो सही दिल से इनको ये आयत याद है, ये जो भी ये वाली बात, ये ना नहीं करनी वरना लानत देंगे, ये भी बात उनको दिल से सारी याद है। इनसे पूछना है घर में आप हाथ बटाते हो, नहीं यार पता है, आई थिंक इट्स नॉट इस्लाम इसमें मसला, ऑब्वियसली नॉट। बिकॉज इसमें ना मैं जब तलाक की पढ़ा था तो मर्द औरत को दोनों को बड़ा इजी है टू गिव तलाक इफ दे वांट टू, अगर नहीं बन रही तो अल्लाह नेवर टेल्स यू टू गो जबरदस्ती स्टे इन अनहैप्पी मैरिज, सही है। तो फर्ज करो हम क्या बातें कर रहे हैं कि आप सेक्स पे ना नहीं करते, आप ये नहीं करते, हमारे अपने हजारों मसले के, हम बाहर नहीं जा सकते, काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, हमारे टिपिकल कल्चर के मसले हैं, ये इस्लाम ने तो नहीं हमें बताया करने को। इस्लाम में तो हज़रत खदीजा की स्टोरियाँ सुनो तो राइट ऑफ द वुमन टू लीव द हस्बैंड की स्टोरियाँ सुनो, तो वही जो 4 शादियों वाली बात पे मैं इतना वो कंफ्यूज होता हूँ कि जिस औरत को नहीं चाहिए कि उसका, इफ औरत डजंट वांट कि उसका मर्द 4 शादियां ना करे या दूसरी ना करे, इट्स ओके, लेट द मैन मैरी द सेकंड वाइफ एंड यू कैन लीव द हस्बैंड, सही है ना, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन ये फ्रीडम और सब कुछ हियर वो फर्स्ट ऑफ ऑल बस हमारे कल्चर ने औरत को ना यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ी बात होती है, है ना, यू कैन फील फ्री इन द वर्ल्ड इफ यू डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड्स मनी,
on his house, on his family's food and चीजें and सब कुछ शेयर हो. स्पेशली अगर आपको पूरी जिंदगी कॉन्फिडेंस का दिया गया हो कि आप अपने ओन पे भी कुछ कर सकते हो. So for them to leave their husbands and go back to their parents or Yeah. start something for themselves, yeah, do something is Mostly very hard. औरतों के बच्चे हो चुके होते हैं, वो फिर सोचना कि ओ बच्चों को साथ लेके जाऊंगी, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी. औरतों के इवन माँ बाप उनका ख्याल रखने को रेडी नहीं होते कि नहीं तुम जाओ वापस भी अपने हस्बैंड के पास. So yeah, there are a lot of things that और यही मसले खत्म हुए थे when you go abroad या सब कुछ आगे पीछे, cause वो सिक्योरिटियाँ खत्म हुई थी उन लोगों की, cause वो बाहर वो औरत काम भी कर सकती है, चीजें भी कर सकती है. So I think people really get to see कि how शादी is cause मुझे लगता है यार शादी तोहफा है, right? You have Allah has given you a partner to enjoy with, spend your life with. It's not something कि तुम मुझे कंट्रोल करो मैं तुम्हें कंट्रोल करूँ. So you know that's never gonna be a good thing. लेकिन बाहर ये देखता हूँ ना कि then the women can go to the police, they have laws, they have certain things, they maybe feel more freedom because you know now they're working and cheesing and doing something, or they can conceive of a life without being forced into a marriage जहाँ पे वो खुश नहीं है. लेकिन पाकिस्तान में जाके it's very hard, man. yeah, but I've also heard of cases like especially in England वगैरह जहाँ पे यहाँ से उठा के लेते जाते हैं वहाँ पे बीवियाँ, लेकिन उनके साथ वहाँ पे भी उनको इतना बंद करके घरों में रखते हैं और बिल्कुल उनको कोई बाहर किसी से इंटरेक्शन नहीं करते. There was recently a case जिसमें पता नहीं 3-4 लोग went to jail about it because they did something so bad to their daughter-in-law कि she ended up in a coma for पता नहीं 9 years or something. But anyway, that's Okay, the next post. 49% of married Pakistani women do not participate in decisions regarding their own health care. What does that mean? मतलब, for example, very common case in Pakistan कि birth control तो उनकी use नहीं करनी, तो a woman keeps getting pregnant हर like अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी 3-4-5 महीने बाद she's pregnant again, and then they want to get, क्योंकि उनके लिए इतना, because it takes a lot of toll on your body like giving birth, सही है, और you keep doing it बार बार, और वो भी इतने कम अरसे के बाद, they want to get their tubes tied, but you need your husband's permission to get your tubes tied, and नहीं मिलती साल. Yeah, I've seen that many times, yaar. Okay. Family hai, they're a bit poor, yeah, they don't have a lot of means, but they have like 10 children. And then I'm like, yaar, why? And then they're like, oh, ये तो अल्लाह की तरफ से है. You know, because we can't, we have sex and there is no other thing and there is no birth control that doesn't exist, or yeah, so we're gonna keep having kids. And then यार मुझे समझ नहीं आती ये जब फर्ज है ही नहीं, दिस इज द डिस्कस्टिंग पार्ट ऑफ आवर कल्चर मैन, कि हम रिलीजन से बहुत दूर हो गए इस मामले में यार, स्पेशली जब व्हेन इट कम्स टू ऑप्रेसिंग वुमेन और गिविंग देम राइट अबाउट देयर चिल्ड्रन और बॉडी, ये वो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम, बिकॉज मर तो खुदा है यार, उसको तो सजदा करना है, वो तो खुदा ने जहाँ दी थी तो उसको सजदा करना था. तो बेचारी औरत का ना कि वो तो इंसान है ही नहीं, मतलब. एंड द सैडनेस ऑफ दिस पीपल, यार लेकिन पता है उन औरतों को ऐसा नहीं पता यार, they like They don't know exactly, they don't know any better. they're not sad perhaps, okay, वो ये क्या पता ये सर्वे करते हुए they're not sad, they're just telling the truth, you know. Maybe दिल से बिलीव कि हाँ यार, मतलब कोई बात मैं अपने हस्बैंड को ना नहीं कह सकती, मैं तो अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन, मतलब. और ये सोल का ताल्लुक बड़ा उससे भी है ना कि अल्लाह दुनिया में बच्चे लाता है, राइट? तो तुम कौन कहो, मतलब ये तो अल्लाह के ये बच्चा तो पहले से था, मतलब बना हुआ, ये तो इधर ही से आना था ऑब्वियसली. तो जिस बच्चे ने आना था वो तो आना आएगा. था, हाँ. वो अब मेरी तरफ से 10 आया 50 आया, वो मेरा मसला है. हाँ यार. So if the औरत doesn't mind, then it's different. Yeah, but देखो, it's also about
not knowing your rights. मतलब आपने एक औरत को अपने पता ही नहीं है कि यार मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए, या दिस इज रॉन्ग, या मतलब नहीं आई कैन से समथिंग अबाउट इट। ये हर किसी की स्टोरी नहीं है, बिकॉज अ लॉट ऑफ वुमेन व्हेन दे टॉक टू ईच अदर सबकी सेम स्टोरी होती है, तो उनको लगता है वो ये तो बहुत कॉमन है। या बहुत डीप रूटेड इश्यूज हैं, तो ऑब्वियसली सालों सालों से मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन एंड कल्चर कुछ मिक्स होके जी भी खिचड़ी बनी हुई है। I think it's दूरी of our religion भी यार। I think this is the biggest show of दूरी of our religion कि हमने अपने, वो तुम्हारी बात है 4 शादियों पे हमें इस्लाम बहुत पता है, लेकिन औरत के राइट्स क्या है वो हम नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। And I don't think Quran maybe dives into this कि यार औरत की मर्जी है बच्चे करना ये है वो, because I think that was clear from Allah कि वो तो उसी की मतलब it's gonna be a combined औरत ही में करना है भाई, मतलब उसका वो है, उसके वो, तो अगर उसको if she doesn't feel healthy enough, if she doesn't feel like हाँ she can do it, then how is it in the husband's hand only कि हाँ भाई बच्चे पैदा करने के लिए करना है। Yeah, people get divorced on this, बच्चे नहीं हो रहे तो ये नहीं हो रहे। दूसरी शादी करनी है, बच्चे नहीं हो रहे, हाँ। मतलब and most of the time they blame the woman for it even if it's not the woman's fault, क्योंकि मर्द को चेकअप नहीं जाके करा सकते ना, वो तो बहुत शर्म की बात है। हाँ है, how dare you। So yeah man, these issues are just not going anywhere। मैं ये जो है ना ये वाकई लिसन ये बहुत डीप रूटेड वो तुम्हारी बड़ी बात है कि हमारा कल्चर इज गॉन सो एक्सट्रीम विद दिस थिंग्स ना कि अब हम सेक्स पे ना नहीं कर सकते तो बच्चों पे ना नहीं कर सकते तो फकिंग हेल मैं कॉन्डम नहीं पहनना तो सेक्सुअल डिजीजेस है तो खैर है, दूसरी औरत है तो खैर है, औरत की तरफ से हमेशा बस खैर है। और हाँ एग्जैक्टली। और आई थिंक ये तो हम कभी सोचते भी नहीं है यार कि अल्लाह में ये नहीं पूछेगा कल यार कि तुमने अपनी औरत को यार इज्जत ही नहीं दी यार, तुमने कोई उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी, कल्चर में तुमने उसको एक काम वाली और एक बच्चे की मशीन बना के रख दिया है। और इंसान तो इंसान है ना यार, वो औरत है या मर्द है, इंसान की तो अपनी फ्रीडम्स फीलिंग्स मीनिंग्स होती हैं। जस्ट कुछ शी इज औरत मींस के ये इतने बड़े बड़े फैसले भी उनके हक नहीं है। हमारे कल्चर में कितना ड्रामेटाइज किया जाता है वुमेन की मिजरी, मतलब हमारी माएँ ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हमारे लिए, बस हमारे लिए किचन में खड़े खाने पकाती रही, शी सैक्रिफाइस्ड हर ओन लाइफ फॉर हमारी ड्रीम्स, तो हमारा ये तो मतलब व्हाई डिड शी हैव टू, मतलब व्हाई आर यू ग्लैमराइजिंग इट सो मच कि ओ भाई औरतों की सैक्रिफाइसेस, तो औरतों के तो दिल होते ही ऐसे हैं, तो बस इसी तरह खुश हैं अपनी फैमिली की खिदमत में। व्हाई, हु आस्क्ड देम? But that's the image of the woman they want in our society. The submissive, बाकियों का ख्याल रखने वाली, किचन में लगी हुई, सबका देखो इसने सबका कितना वो रखा हुआ है, सबको इसने जो है ना एक घर में जमा किया हुआ है, सब अच्छे से खुश हैं, वो अच्छी औरत है बस। They have accomplished that very nicely. हाँ ना, इसलिए तो बाकी सब औरतें उनको बुरी लगती हैं जो काम करती हैं, जो कुछ और करती हैं। तो उनकी क्या गलती यार, उनकी भी देखो यार कि ये देखो हम इस बारे में बात कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब हम बड़े हैं सब कुछ, लेकिन बचपन से ये जब नॉर्मलाइज होता है ना कि यार भाई बाहर जा सकता है बहन बाहर नहीं जा सकती, सफाई के काम है तो वो बहन करेगी, भाई को जरूरत नहीं है करने की, भाई जो मर्जी है मर्द जो मर्जी है शादियां कर ले चीजें कर ले अपनी मर्जी कर ले वो खैर है, औरत अपनी मर्जी से शादी करके लाए तो इट्स सच अ बैड स्टिग्मा। मैंने एक घर में देखा हुआ है यार कि द मर्द कैन ब्रिंग अ गर्लफ्रेंड बी लाइक हाँ दैट्स ओके, बट द गर्ल सेज आई हैव अ बॉयफ्रेंड तो अस्तगफिरुल्लाह। तो यार इट बिकम्स दैट्स व्हाई दे सी वुमेन हु हैव अ से, तो दे उनको बड़ा खराब लगती है वो औरत, यू नो कि ये औरत की, ये औरत हो की वर्ड शी हैव अ से, ये औरत हो के शी कैन से नो टू सेक्स हो, मतलब औरत हो के शी कैन डिसाइड इफ शी वांट्स टू स्टॉप हैविंग चिल्ड्रन, she can make her own decisions। oh
after 2 children she can say कि now it's enough, I don't want to have more children. That's why they're scared of educated women, because थोड़ा सा जो दिमाग खुलता है उनको समझ आती है कि oh wait a second, ये तो गलत हो रहा है, तो वहां पर उनको तो नहीं नहीं नहीं, हमें पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए. And I'm sure majority of men can relate to this. उनको औरत ऐसी नजर आती तो उनको बहुत हाँ. मॉडर्न लगती है. Exactly. कि लव मॉडर्न है फिर उसका. हाँ. Goes, what's modern about it? She's open-minded. She has her own say. ये मॉडर्न है उसके बारे में. औरत की मॉडर्न होगी है, कपड़े नहीं, चीजें नहीं, हाँ. कुछ भी नहीं. She now has her say, and she can say can no speak to her certain mind, things. She हाँ. can speak her mind. ये मॉडर्न बात होगी. और औरत सबमिसिव होनी चाहिए ना. बस औरत तो मैं दूसरी शादी भी की हो, वो बस मुझे देख के शर्माती रहे, उससे बोला ना जाए, बस अपनी आंखें नीचे रखिए, बस जी 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 करती रहे. परफेक्ट आइडियल वुमन. and I'm sure everyone agrees to that. कि हाँ ये ठीक है. हमारे कल्चर में को ये था, अच्छी बीवी है ही, चुपचाप खाने पकाती है, घर का ख्याल रखती है, सेक्स पे नहीं करती मुझे. हाँ. सेक्स पे ना नहीं बोलती, बच्चे जितने मर्जी पैदा करा लो, उसकी हेल्थ खराब हो रही है नहीं हो रही है, मर्द डिसाइड करेगा कि हो रही है नहीं हो रही है. हाँ. सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वाली तो बात बिल्कुल ही ना खत्म, मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल हो गई है ना. बट आई एम श्योर आई अंडरस्टैंड. तुम क्या मसला है, मैं मुझे पता है ना. तुम क्या So- क्यों कह रही हो मुझे बस. So over time this becomes so fucking normalized कि man Yeah. ये religion मैं नहीं मानता अपना यार. At least मैंने कुरान में ये बात नहीं पढ़ी कि यार हाँ we're gonna oppress the women. हाँ. They're the slaves. हालांकि वही कुरान में भी सिर्फ एक किस्म की बात है, उस मैंने औरत पता है रिब बोन से बनाई है for you to protect her or something like that. I don't know exactly उसका वो क्या है, but that's the only वजह से वो कहते हैं कि नहीं मर्द को तो ज्यादा वो बनाया है क्योंकि Yeah, you're physically strong. You should protect the woman. Yeah, That's that's okay. it. That's it. What's wrong with that? That's the only thing जो वो इसको प्रोटेक्टर सा ले लेते हैं ना, कि जैसे अब सब कुछ मेरे पे है तुम्हारा, so मतलब you're under my command now because I am gonna protect you and I'm the provider and the protector, so I am in control of you, or now you're my slave basically. Sad. Well, any other post? Any other facts? सर्वे में क्या क्या किया मैंने यार? 52% of married Pakistani women do not participate in decisions regarding visiting their family or relatives. ये तो हमें पता ही है यार. मतलब अभी तो तुम गई थी, अभी दोबारा क्यों अपने घर जा रही हो, इतने दिन रहने के लिए क्यों जा रही हो, ईद के पहले दिन नहीं जाना घर Yeah, the अपने. other side कि मेरे घर में फैमिली से मिलना है तो तुमने तो आना ही हाँ, आना है. आना ही आना है. मतलब या तुम्हारा प्लान था अपने घर जाने का, नहीं आज तो मैंने अपने घर जाना है, आज जी. ईद पे तुम मेरे घर होगी. हाँ, क्योंकि पहला दिन तो ईद का भाई मेरे घर वालों के साथ है ना. Doesn't matter if you want or नहीं. हाँ, obviously no, I don't. I think everyone wants to go to their house यार पहले दिन. मतलब फैमिली खत्म हो जाती है ना after getting married. हाँ, apparently आपने अपने हस्बैंड ने शादी की और आपने उसके माँ बाप को अपना माँ बाप बना लिया हाँ. बस उस दिन. Now it's done. हाँ. अच्छा जी, अब जल्दी जल्दी इसमें से गुजरते हैं बाकियों में से. It's 24% of married Pakistani women have experienced physical or sexual violence from their own husbands. It's 24%. और 14% of married Pakistani women say that their husband insists on knowing where they are at all times. that's low. I think 14%. हाँ, I think ये बहुत higher up है. 10% of Pakistani women say that their husbands do not permit them to meet their family female friends. मतलब दोस्ती भी होनी चाहिए. उससे पहले क्या था कि they have experience what abuse क्या है? Abuse and sexual violence. मतलब they get raped. Sexual abuse and sexual violence. हाँ. मतलब वो तो होता ही नहीं है ना. Physical or sexual violence. मतलब या चपेड़े चपेड़े या sexually मतलब कुछ. Husband can't rape his wife. हाँ, मतलब इस्लाम में marital rape तो है ही नहीं. There's no term as marital rape. It doesn't exist. मतलब if a woman says no because she was tired or whatever and the man just grabs her and जबरदस्ती does it, so that's okay. हाँ, क्योंकि जब आपने निकाहनामा साइन किया तो you signed up. So you signed away your body apparently. Yeah. Yeah. That's crazy, man. मतलब that's like rapist के लिए वो हो गया है. वो शादी कर लो तो हाँ, मैं तो exactly. अपना वो करता हूँ. I'm a rapist. I like doing हाँ. that. I'll marry someone.
फिर तो मुझे I केस do it ही every करना। day, हाँ। अब जब मैं उससे तंग आ जाऊंगा तो मैं उसको तलाक देगी, कौन शादी कर लूंगा? मैं चार रख लूंगा इकट्ठे यार, चारों को हाँ रेप क्या करूंगा आगे, एंड देन they can't say no to me। यार, मतलब देखो ना यार, कितनी फजूल इस किस्म की बात है, Like it's मतलब fucking dangerous man। एग्जैक्टली यार, Like क्या it's फीड fucking कर रहे हो dangerous ये? man। ऑलरेडी यार, ड्यू टू लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन इन पाकिस्तान, देयर बीन सो मच वो इंस्टेंसेस जहाँ पे शादी के बाद लोगों को पता नहीं है हाउ टू एक्ट एंड दे एंड अप डूइंग क्रेजी टाइप ऑफ डैमेज टू द अदर पर्सन, मतलब सही उसको खराब कर दिया है। मतलब पहले शादी की रात दे वेंट होम एंड वहां से दे वेंट टू द हॉस्पिटल, मतलब इतना बैड सीन है। तो उस तरह के मर्दों का ये भी बातें कहना शुरू कर दो कि बेटा तुम टेंशन ना लो, यू कैन डू इट व्हेनेवर यू वांट। तो फिर वी डूम्ड। यार we as Pakistanis degrade our women बहुत पूरी तरह यार। हम उनको ना कोई इज्जत नहीं देते, हम उनको when you speak of such things then you realize no कि यार इनकी तो कुछ, they're barely human, you know, they're बस to हाँ, provide for the man with what he wants। आप मार्केट कभी चले जाओ यार, मतलब आप पे करोड़ लोग आपको ऐसे खड़े होकर ताड़ेंगे जैसे you're just an object, you know, जो उनकी आंखों के उसके लिए गुजरी है सामने से ठंडक के लिए, और मतलब ये तो उनका गॉड गिवन राइट है, और तुम इधर क्या कर रही हो हमारे बीच में? Man, और तुम्हारे बीच में तो हम तो तुम्हें देखेंगे। the faces I've seen when they see a woman fucking hell, scary man, how desperate they are, So yeah, how frustrated they seem। why? कहाँ से आ रही थी फ्रस्ट्रेशन? और ये तो वो मर्द है जो घर में रेप कर सकते हैं अपनी औरत को, औरत ना नहीं कर सकती, चार से शादियां करने को चार तैयार से है ये शादी लोग। करते हैं, खेती है, सब कुछ है, मतलब इतनी सेक्सुअल फ्रीडम देने के बाद भी दे लाइक नहीं, जो सड़क पे ना उसको वो भी सताड़ेंगे कि उसके अंदर देख रहे हैं। यार, बट आई थिंक दैट्स समथिंग एल्स। सड़क पे जो निकली हुई है, और अगर स्पेशली अगर कुछ मतलब तैयार होकर निकली हुई है। आई मीन इफ यू कैन सी योर फेस एंड चीजें, तो ये वो तो वो इस्लामिकली यू It's नो for दैट्स everyone. दैट्स हराम ऑब्वियसली, What is haram? दैट्स व्हाट दे थिंक राइट कि But it's और also haram to stare at someone, I यस ऑफ believe. कोर्स, बट यार हमारे कल्चर में यार औरतें नजर ही नहीं आती यार, इसलिए कि जब वो आती है फाइनली तो देर ओ मतलब या अक्सर कभी YouTube पे या ऐसा कुछ, I love watching those food videos वगैरह, उसमें जो जाते हैं ना बाजारों शजारों में स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए, तो औरत आपको जुगों में नजर ही नहीं आती कहीं पे। कभी कोई बहुत कम इधर उधर कोई फुल फ्लेज ढकी चुपी की आपको नजर आ जाएगी, अदरवाइज इट्स ऑल मैन। यार वो बेचारा गोरा कपल यार लाहौर में Yeah. फिर से बेचारी वो पिंच मी इन माय So बैक, pinch my butt. आई मीन यार कोई इज्जत नहीं छोड़ी कहीं पे भी उन्होंने पाकिस्तानियों की, कुछ पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग, और ये कहाँ लेके जाएंगे इतनी डेस्परेशन, और इसका एंड क्या है? मतलब आप यू वांट कि पब्लिक स्पेसेस से बिल्कुल औरतें डिसअपेयर हो जाएं एक पॉइंट पे आके, बिल्कुल ही हमारी औरतें किसी चीज में पार्टिसिपेट ना कर सकें, कोई इवन यार कंट्री की ग्रोथ के लिए आई थिंक अगर हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज नॉट वर्किंग इन देयर होम एंड कांट मेक डिसीजंस ऑफ देयर ओन, उनकी कोई उस तरह की पावर ही नहीं है, तो आपका मुल्क किधर पहुंचेगा इनमें? if you just want them to be home home slaves, Exactly. doing nothing and Not contributing to the no society in rights, any no way. nothing, हाँ कोई कुछ भी नहीं। So, yeah, this is this sad topic state. is पता है वो बहुत हो गया यार। Yeah, we can keep talking about it and keep talking about it and get frustrated, and yeah, there's no end to it. I'm a Pakistani यार, and I love my country, but when you speak of such things ना, तो it's very hard to like certain things about your culture, man, or you know the way we operate। You can love your country without loving its culture, I think. यार culture में हमारा यार कुछ कुछ चीज़ों में it's very beautiful, लेकिन हमने culture और religion और सबको mix करके कोई इतना गंदा वो मिक्सचर बना दिए कि अब you can't, एक तो उसमें से आप एक चीज कुछ कर नहीं सकते, लाइक दोनों मिक्स इतने वो हो चुके हैं कि उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते anymore, और बस अब इतना इंग्रेन हो गया है कि आप उसको निकाल भी नहीं सकते। By God, it gets really hard for a man as well यार, पता है, because अब एक मर्द है जो बचपन से देख रहा है but अंदर से he doesn't agree with these things, Yeah. for him to treat his wife fairly is also very difficult, पता है। Yeah. और unmarried, हाँ, oh what are you doing, लोग क्या कहेंगे? बगैरत सबसे हाँ. बड़ा, if you allow your woman freedom
you're a बगैरत. हाँ ये कल्चरली मर्दों को पता है ये बात सच है. वो गर्ल्स एग्जैक्टली चाहेंगे इट्स ओके, मे बी हाँ लाइक फाइन यार, नहीं यार मेरी बीवी है, आई लव हर, आई शी इज अलाउड टू गो आउट. तुम बगैरत है सबसे पहले. हाँ सही है. अगर आप बहुत ही इस्लामिकली उसमें पर्दा चीजें के बगैर जाए तो वो तो बिल्कुल ही तुम बगैरत हो. यू आर गिविंग हर राइट्स टू मतलब डिसाइड ऑन सर्टेन थिंग्स. तो वो यार समटाइम्स योर ओन हाउस होल्ड यार, योर ओन मदर सिस्टर विल लाइक यार ओ ये क्या हाँ ये तुम इस स्टेज को थोड़ी लगा लिया है. या अगर आपकी बीवी आपसे एज अ फ्रेंड बात करती है यार यार करके, या थोड़ा आपका नाम ले लेके, या इस तरह, इवन लोगों को उस पर भी मसला होता है कि देखो कितनी फ्रैंक है अपने हस्बैंड से. वाई शी सो मतलब इस तरह क्या है, थोड़ा मतलब इजी हो जाओ ना, तमीज से बात किया करो. मतलब यू जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर लाइक अ फ्रेंड, लाइक नहीं यार ये वो बातें हैं यार, वार्मथ दिखाना कपल्स का बहुत वेट है यार. हाँ सीरियसली एग्जैक्टली. माँ बाप को देखो ना यार, वो लोग लड़ लेंगे आपके सामने, हाँ लेकिन प्यार नहीं दिखा सकते. हगिंग या कोई हाँ कोई पप्पी ऐसे जप्पी, पप्पी एग्जैक्टली लाइक कोई चीज पे नो ऐसे आते जाते कभी नहीं. नहीं, ये नहीं देखते आप लोग. ये पता है कि उस औरत को इतना प्यार दिखाना इज रॉन्ग मे बी. या प्यार इतनी कोई गंदी चीज है कि उसको सिर्फ आप बंद हाँ कमरे के पीछे दिखा सकते हो, लेकिन चंडे बकवास लड़ाइयाँ आप खुला करो हर किसी के सामने, वो कोई मसला नहीं. ये देख लेते हो आप. हाँ या बल्कि प्री ये सब देखो भाई. Because it looks weird. My mother and father kissing each other or hugging each other is so fucking weird. वो एक दूसरे पे शाउटिंग वैसे आया था सोफा पे. They're having a bad day. हाँ एग्जैक्टली. But what's a good day then? उसी में some like a few days before मैं ये देख रही थी चाइल्ड साइकोलॉजी पे कि द किड जो अपनी जिंदगी में जिस तरह के रिलेशनशिप्स वो देखता है ना, वो बाद में भी अपनी जिंदगी में उसी तरह के रिलेशनशिप सीक आउट करता है, बिकॉज दैट्स व्हाट दे कंफर्टेबल विद. सो इफ दे सी abusive relationships in their own lives throughout, जो उनको बाद में भी जब abusive relationship में वो लोग होते हैं, that's why they're more acceptable to it, and there are more chances कि they'll fall prey to it because उनके लिए बहुत normal है कि हाँ यार मैंने पूरी जिंदगी यही देखा है. So you're actually encouraging the pattern to keep repeating itself. वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि when तुम कह रहे हो ना बचपन से वो देखते हैं, तो फिर then going against the against the whatever, what do you say, against the norm, against the tide, it gets really really hard कि यार नहीं, maybe I should oppress her, maybe I should oppress यार her. लोगों के सामने मैं pretend करूंगा जैसे I'm oppressing her, लेकिन पीछे जाके यार फिर जब अकेले होंगे तो यार अच्छा ठीक है whatever, लेकिन लोगों के सामने फिर भी I have to keep that. अच्छा नहीं, because it's not normalized yet. You can have a healthy, fun, good relationship. हाँ लविंग अच्छा जिसमें आप दोनों इक्वल हो, जिसमें आप दोनों के डिसीजंस जो है इक्वली इम्पोर्टेंट हो. आपको एक दूसरे की राय लेने में हर वक्त दिल करे यार कि यार हमारा मेजर डिसीजन है कोई जिंदगी का, तो और दोनों बैठते हैं, दोनों डिसाइड करते हैं क्या करना है, नॉट जस्ट कि ओ हस्बैंड ने कह दिया एंड वी गोना डू इट बस. हाँ, that sounds more Islamically भी अच्छा, culture भी अच्छा कि यार it's a equal, fun, loving, equal say relationship. और ये जो हम बातें पढ़ रहे हैं ना, ये तो फिर these people should not even be married, I think यार. मतलब अगर आप you being raped and you can't say no, तो लेकिन फिर वही बात है यार, so many people are with the wrong person in our culture because शादी से पहले you're not allowed to talk to any guys, और एकदम से एक दिन आपके माँ बाप आपके लिए लेके आएंगे, हाँ, और बस आपको एक दिन के अंदर अंदर you have to be a proper wife और बस that's your life. आपको ऑप्शन थोड़ी मिली है. बेटा जाओ जाके देखो कौन पसंद आता है, हमें बताओ आके, अच्छा नहीं हमें वो वाला पसंद है लड़का, अच्छा तुम्हारी शादी करा दे. लंबा हो गया मुझे लगता है. think we should wrap it up. Nice talking to you यार. This was a very tough topic to be honest यार. ये पता है I could have gone on ये इस एक टॉपिक से बहुत करोड़ और टॉपिक्स निकल जाते हैं, इसलिए this is a very वो we can keep this topic I बाद think ये में different है. वो इसके बहुत सारे वो branches निकल सकते हैं मेरे ख्याल से, but yeah, fucked up to read this, man, seriously. I hope women in Pakistan get their rights. Yeah, it's also about laws yaar. मतलब if your laws change a little bit where you can go and report such incidents. I think for the first time ever in Karachi there was a court that sentenced a guy for marital rape. तो अभी उन्होंने finally recognize करना शुरू किया. So I hope, और उसके नीचे भी there were a million, like from
किसी ने पोस्ट लगाया हुआ था, उसके पीछे देयर वर मिलियन कमेंट्स जहाँ पे लोग लाइक व्हाट द फक इज दिस, ये तो इन्होंने शादियों का भी मजाक बना दिया है, मतलब अब हम अपने पर्सनल इश्यूज जो है वो कोर्ट कचहरियों में जाके ड्रैग करेंगे, और ये क्या बात हुई ना, क्या होता है मैरिज, मतलब इस टाइप की चीजें। सो एटलीस्ट कोई स्टेप आया है, बट from the looks of it people are not yet ready to accept it, but hopefully maybe आज से 5-10 साल बाद इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, because yeah, we pray यार कि औरतें जहाँ पर भी हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, they have their rights, they can fully live their lives, हमारे मसला ये भी है ना कि fully औरत जब जिंदगी गुजारेगी तो मोस्टली उसको बड़ा गलत तरह देखा जाता है कि ये खराब ही होगी, मतलब औरत doesn't have to be खराब to live her fully life. Yeah, I also think औरतों को मौका नहीं दिया जाता हमारे कल्चर में to actually live their lives fully, because पहले वो अपने माँ बाप के घरों में होती है जहाँ पे होता है नहीं तुम शादी के बाद करना, जो तुम्हारी ख्वाहिश है तुम शादी के बाद करना, और तुमने ट्रैवल करना तुम शादी के बाद करना, और तुमने लाल लिपस्टिक लगानी है तुम शादी के बाद लगाना, इवन इस तरह की बेसिक थिंग्स। और जब उनकी शादी हो जाती है तो हस्बैंड, जब मेरी शादी होगी अब तो तुम मेरी बीवी हो, मतलब एक्सक्यूज मी बेटर वर्क, मतलब घर बैठो और काम करो, कौन सी याशी करनी है तुमने, कहाँ ट्रैवल कर, लाइक मुद्दे है, अब नाउ तुम मेरे उस पर चलोगी सारा। सो या हमारी औरतों को कभी टाइम भी नहीं मिलता। Yeah, so women in the world, good luck यार, and I hope good things changes, get better soon. inshallah यार, Inshallah. inshallah, because these things we just talked about were horrific, man. Yeah. I hope more people realize this. Yeah. I hope if there are Some big women changes are needed. and if there are women in this situation, I hope they find a way to get out of it, yaar, because Hope so, man. yeah. Hope so. No one deserves to live like this. Chalo yaar, nice talking to you. Yeah, me too.